Hey guys, welcome to Travelsheesh. We are back with one another video of unseen places in Turkey, which is Bahcesehir Park, Istanbul, which is known as Golet Park as well. It is the best place to enjoy Turkish traditional food, a walk surrounded by greenery, and beautiful lake. Let's enjoy the Bahcesehir Park. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवलशीश। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बाचेशहर में। इट्स अ वेरी नाइस पार्क एंड इट्स आर्टिफिशियल लेक ओवर हियर। तो चलें हमारे साथ, लेट्स गो। गोलजुक लेक से निकलने के बाद हम पहुंचे रात के वक्त तकरीबन इस्तांबुल, और हम बहुत थके हुए थे तो हम सो गए और हमने अपना ट्रिप प्लान किया नेक्स्ट डे टू bahcesehir पार्क। bahcesehir पार्क नोन एज गोलेट पार्क एज वेल, वो इस्तांबुल मेन सिटी से तकरीबन आधा एक घंटे डिस्टेंस पर है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड द ट्रांसपोर्ट यू आर गोइंग, बिकॉज ट्रेन और बसेस भी वहाँ जाती हैं बट पार्क तक आपको लेकर नहीं जाती हैं। सो इट्स बेटर टू टेक अ कार एंड गो देयर। हम अपने फ्रेंड सोनर के साथ वहाँ गए थे, तो हमारे लिए ईजी था वहाँ पहुँचना विदाउट एनी हैसल। एंड आई गेस दिस इज द रीज़न वाई दिस ब्यूटिफुल पार्क इज लेस नोन इन द टूरिस्ट, बिकॉज वहाँ डायरेक्ट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, बट bahcesehir तक जाती है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एरिया एंड अ पॉश एरिया इन इस्तांबुल, जहाँ आजकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिमांड में हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, सो यू कैन सी दैट एरिया, बट डेफिनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पार्क के साथ ही एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक है, जहाँ पर साइड पर बेंचेस भी रखी हुई हैं। वहाँ यू कैन सिट एंड एंजॉय द नेचर, द वेदर एंड द ब्यूटीफुल serene व्यू। We have also enjoyed the calmness there, and in this visit we have chosen the places which are close to nature and unique one. So if you are new to our channel and haven't seen our previous videos, so you can go to our channel and see the unseen places of Turkey series. And if you like our videos, please like, comment and subscribe to our channel for more travel videos. Istanbul is the weather. Weather is so beautiful all day long. आज 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, चिली एंड विंडी एंड वेरी काम। हम यहाँ पर अभी इसके बाद रेस्टोरेंट में जाएंगे। वी हैव ऑर्डर लंच इन द मंगल रेस्टोरेंट। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि दे गिव यू ऑल द रॉ मटेरियल एंड यू विल सेलेक्ट इट फ्रॉम देयर एंड दे विल कुक इट, यानी फिश, मीट एंड चिकन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। You can select the seasoning, you can select the meat and then you can wait for your lunch. They will cook it. So हमने कहा जब तक हमारा लंच रेडी होता है क्यों ना बाहर जाएं और अच्छा मौसम के मज़े लें, कुछ पिक्चर्स लें एंड एंजॉय। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिकन भी मैरिनेट की हुई है, मटन है, लैम्ब है एंड अदर फतायर्स मौजूद हैं, डिप्स मौजूद हैं, विच इज़ द मेन स्पेशलिटी ऑफ टर्की। अगर आप टर्की में हैं तो यू शुड मस्ट ट्राई द कोल्ड मेज, द जाजेक्स एंड a lot of things are there, so you can select and give the order and sit. They will cook and serve you. So it's really amazing and unique experience. But as they say, that good things never come cheap. So it's really very expensive.
So if you have the budget, you should visit there. Otherwise वहाँ और भी restaurant हैं which serve you different food. But this is the specialty of this restaurant, so they charge it. So our food is here. This is the stuffed mushroom with cheese. ये क्रूचाजिक है. साथ में आपको नज़र आ रहा है दिस इज मिक्स ग्रिल, जिसमें हमने ऑर्डर किया है चिकन, लैम एंड मटन. एंड दिस वन इज चीज़ विद क्रश्ड ऑलिव्स एंड दिस वन इज योगर्ट विद चिलीज. द टेस्ट वाज गुड. और ट्रेडिशनल फूड का अपना ही मज़ा होता है. सो दे कुक्ड इट वेरी वेल एंड हमें मज़ा भी बहुत आया इसको खाकर. तो आप भी इंजॉय कीजिए. रेस्टोरेंट के साथ ही एक छोटा सा प्लेग्राउंड है. सो एज यू नो, अफान साहब को उसको देखकर मज़ा आ गया. सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली दैट इफ यू आर गोइंग विद द किड्स, तो किड ऑल्सो एंजॉय द प्लेग्राउंड एंड द राइड्स ओवर देयर. और आप जो हैं पार्क में वॉक कर सकते हैं. Park is really peaceful place. So ये शहर की हसल बसल and rush crowd से थोड़ा दूर है. So if you are a calm person, relaxing person, so you can go over there and enjoy some relaxing moment away from the city and away from the crowd. इसके साथ ही हम करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड. उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. This is all from Bahcesehir. If you like our videos, please subscribe and hit the bell icon. If you have any question, please place it in the comments and we'll see you in the next video. Bye.